I request Dr. Milan Pandey, Pro Vice Chancellor of MIT WPU, to please share his thoughts. Very good evening to every one of you. And congratulations, heartiest congratulations for participating in this Vichar Manthan 3.0. यहाँ पे हमारे गुरुवर्य डॉक्टर संजय जी उपाध्याय बैठे, उनके सामने क्या बात करेंगे. सूरज को दिया दिखाने जैसा है. द पर्सन हु डिलीवर्ड मोर देन 2000 एपिसोड्स on his very unique program called Gappashtak, not in India but abroad in US, UK, Canada, everywhere. And recently he started his new series. उसका भी 1500 के ऊपर हुआ है. उसका नाम है मन करारे प्रसन्ना. A big round of applause for Dr. Sanjay Upadhyay. I would like to speak on the content. आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा, बोला. इंडिया स्ट्रेटजीज, वाटर डिप्लोमेसी है, डीलिमिटेशन है, सोशल इक्विटी है, so many 5 topics, and you spoke spontaneously. When I was thinking about this Vichar Manthan 3.0, I was just talking to Harshal Bhusari, the Professor Harshal Bhusari, the chief coordinator. Again, a big round of applause for Harshal. This is the 3rd edition. आई रिमेंबर कि हम लोग एजुकेशन के ऊपर भी बात करते हैं, एजुकेशन 5.0 है ना, विचार मंथन 3.0 है. बट इट कम्स टू माई माइंड व्हेन वी कॉल एजुकेशन 5.0, इसका मतलब क्या है. इफ़ यू रिमेंबर ऑल दोज एंशियंट डेज व्हेन वन गुरु लिमिटेड शिष्याज डिलीवरिंग द नॉलेज, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कॉल्ड एजुकेशन 1.0. एजुकेशन 2.0 when ink got invented, 15th century. And then the bricks, mortars, universities started, the new era started, education 2.0. 1990 when WWW came into existence, World Wide Web, the third era, education 3.0 started. 4th, है ना, AC और BC बोलते हैं हम. कोरोना के बाद उसका डेफिनेशन चेंज हो गया. आफ्टर कोरोना, बिफोर कोरोना. The education 4.0 started before corona, और वो था हमारा, मैंने 3 बोला, WWW. The next came PowerPoint presentation, online education, the internet, speed of the internet got increased. The education 4.0 started, they called it as a augmented reality, virtual reality, mixed reality, extended reality, the future of the education and education of the future. है ना, वो बड़े बड़े कैमराज ऐसे आग पे लगा के गेम खेलते हैं. That is nothing but the new education, which is, हमारे यहाँ पे वेल्डिंग का फर्स्ट ईयर को हम वेल्डिंग पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग को. लोग वो बड़े बड़े कैमरा लगा के वेल्डिंग करते हैं. That is the new terminology in education called AR, VR, XR, augmented reality, virtual reality. और अभी पोस्ट कोरोना के बाद जो आ रहा है 23, 24, these are all virtual labs, है ना, जैसे मैंने अभी वेल्डिंग का एग्जांपल दिया. सो आई जस्ट थॉट कि विचार मंथन 3.0 की बात हो रही है. सो लेट मी टेल यू ऑल दो द एजुकेशन 4.0, एजुकेशन 5.0. आई एम द डाई हार्ड फॉलोअर ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. He said, what required is 5 T. What are those T's? Trade, travel, that is tourism, trade, tourism, technology, tradition. Tradition is very, very important. मैं 5 T बताऊंगा आपको, but ये this tradition है, the Nalanda, Takshashila, the kind of education, education 1.0. So he said these are the basics. इसलिए एजुकेशन में IKS इन्वॉल्व हुआ, दैट इज़ द इंडियन नॉलेज सिस्टम, एंड द न्यू पॉलिसी केम अप, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, विच इज़ मेजरली फोकसिंग ऑन द इंडियन वैल्यूज, कल्चर्स, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन. दिस यूनिवर्सिटी इज promoting the value based universal education system. Our founder president Dr. Vishwanath D. Karat sir is a firm believer of this value based universal education system. और मोदी जी भी वही कहते हैं.
ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन, और क्या टी मिस हो रहा है? कैन यू जस्ट सजेस्ट मी? Anybody? You are a big orator, you have developed as oratory skills. Trade, tourism, tradition, technology, and one more T is missing. I will leave it to you. मुझे बोलना, मैं जब भाषण खत्म करूँगा मुझे बोलना 50 क्या हुए. So, a short brief. This is the third edition of this Vichar Manthan 3.0. 93 participants, they participated in this, they registered for this. 78, they attended actual program. There were 4 judges. 80 students, they came all the way from Ferguson, SP, Sinhagad College, Balaji University, Amity University, and the best part is the representation from Madhya Pradesh, Gujarat and Gurgaon. We found it in this Vichar Manthan 3.0. I would like to congratulate Harshal Bhusari, Neelam Pandit, Parimal, and all SOG RA team, those who took the efforts above and beyond, ऐसा मैं word use करता हूँ. They spent maximum quality time, कभी सोए नहीं होंगे, कभी काम किया होगा. It's a big task to get almost 93 participants. So I think let us congratulate the entire team, the RA team of SOG, for doing this fantastic job. Five prizes, first, second, third, and 2 consolation prizes. And I would like to congratulate all those. लेकिन this is not the end. यदि आपने participate किया और आपको prize नहीं मिला, so don't get afraid of it. एक definition था, I am promoting the startups in MIT. So when I visited Finland and other countries, Israel, they are celebrating the failures. उन्होंने fail का definition ही बदल दिया. FAIL, they called it as the first attempt in learning that is fail. And in Finland, they used to celebrate. What are those things learned out of it? हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है ना. एक शायर बहुत अच्छा कहता है कि राह में मुश्किलें होंगी 1000, तुम 2 कदम चलो तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, बस तुम चलो तो सही, चलो तो सही, चलो तो सही. चलना ही जीवन है. मैं 5 टॉपिक्स आपको दिए गए थे, बट व्हाट आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ द कंट्रीज. वर्ल्ड के सामने 3 बिगेस्ट प्रॉब्लम्स क्या है. आई वॉज रीडिंग द बुक फ्रॉम पद्म विभूषण डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, एंड इन हिज बुक फ्रॉम लीप फ्रॉगिंग टू पॉल होल्टिंग. कभी जरूर पढ़ना आपने ये किताब. उसमें ही हैज़ गिवन द फॉर्मूला कॉल्ड 347. ही सेड द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड इज 3E. व्हाट आर दोस 3E? Employment, environment, and any guess? No. Correct. Employment, energy, and environment. कहीं पे भी जाओ, climate change. These are the real problems in front of the society, the world society. And how to solve it? There is a formula 347. These 3E, these are important: employment, energy, and environment. And what is the formula? These 4 called STEP. Societal transformation. T is technology. E is environment, the ecosystem. And P is the policy making. Policy makers, they have to play the very, very important role for the society transformation, for solving these problems. और 7 का है, they said employment is the biggest problem. How to solve it? Startup is the only answer. और स्टार्टअप कैसे चाहिए? He said assured, ASSURED, assured businesses, assured startups. And he has given the long form. A, कैसे स्टार्टअप चाहिए? A, affordable, S, sustainable, S, simple, universality. So, to solve these employment problems, we want all our students, they should be job giver and not job seeker. How, whatever the education you are taking,
how you can apply it for starting your own enterprise. And that is what the education stands for. Man making and character building is the purpose of education. And expansion of mind and expansion of the heart is the motto of education. That is what the Swami Vivekananda said. अपने पैरों पे खड़े होके जो अपना बिजनेस करेंगे, that is the purpose of education. That is what Swami Vivekananda said.